Let us start. Engineering Mathematics is a series of exam decoder. This is lecture number 3, module number 4. In these lectures, we will discuss the changing order of integration. Okay. Now we will discuss the changing order of integration. This is the third type of module number 4. Total 3 questions are available in this question bank, and means 3 questions means 25% weightage. I think that is 25% weightage of this type of question. Let us start. It is so easy questions. Let us start to discuss changing order of integration. This is a question. Questions are given. Changing order of integration. We want to change the order of integrations. Means in integration 0 to infinity, 0 to x, f of x, y, dy by dx. Now we want to change in order of write down that integration as it is. We are write down let I is equal to whatever may be the integrations that are given. Write down that integration as it is. We are writing here the integration as it is. Means as it is, we are writing that is integrations it as it is. Okay, that is consider. We are considering that is I. Okay. Now next step is that the sketch the region for these integrations. Now we want to sketch the region for this integration. The first of all sketch the region for this integrations means what is the first which integrations we are integrating. We are integrating first integration is y integrating first means whatever may be the first integration that is available, that is limit for y. What is the limit for y? Old limit means the equations are given in these questions. From observations for that questions, what is limit? We are given that this is a 0 is a lower limit. This first 0 is a limit, lower limit for y, and x is the lower limit of y. X is upper limit for y. Means in old limit is such type of limit that limit is available in this question. By observation of the questions, we are finding that limit, that is y. Means first we want to integrate. आपको first integrate करना पड़ेगा y के साथ, इसीलिए जो first integration की limit है वो y की limit होती है. Therefore y is equal to 0 is lower limit, y is equal to x is upper limit. Okay. After that, after integration with respect to y get completed, after that we are integrating with respect to x. नेक्स्ट इंटीग्रेशन आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ. Therefore, whatever may be the limit which are available for this integration, that is the limit for x. 0 is the limit for lower limit for x, and infinity is the upper limit for x. That is your observations. We are able to find by observing the equations, by observing the questions that are given. We are able to find the limit of x and y, that is a limit that is called an old limit, means limit for observations. From that observed limit, we sketch the region. From that observed limit, the sketch the region. The what is y is equal to 0? Draw the line y is equal to 0. That is nothing but equal to y is equal to 0. Draw sketch the region. Y is equal to 0. That is nothing but equal to x-axis. This is L1. Later, upper limit for y is equal to x L2. This is a upper limit. Okay. This is L1 is y is equal to 0. That is x-axis. L1 is the lower limit for y, and y is equal to x is the upper limit for y. Y is equal to x is upper limit for y. Now the next, x is equal to 0. X is equal to 0 means y-axis. X is equal to 0 means y-axis. X is equal to 0 means y-axis. That is L3. L3. The line number 3. And x is equal to infinity. This is upper limit. X is equal to infinity is upper limit. That is means the x is equal to infinity means that is a line parallel to the y-axis passing through the x is equal to infinity at that point.
Okay, L1, L2, L1, L2, L3, L4, that four different lines. What is the bounded regions? What is the regions of that integration? That is the regions which are available for that shaded here. That is the region for integrations. If you observe these original equations, from that original equations, which integration which are integrating first, आप जो observe करने के बाद first कौन सा integration integrate करने वाले हैं? Y. What is means for that? The meaning for that is the first initially strip is parallel to the y axis. अगर हम y का लिमिट फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं ऊपर के इंटीग्रेशन में, जो इंटीग्रेशन दिया है उसका मतलब ऐसा होता है, तो वो स्ट्रिप पैरेलल y एक्सिस को है इनिशियली. And what we want to do? We want to do the find the limit of integration that strip is a parallel to x axis. x axis को strip parallel करके हमें क्या करना है? उसकी लिमिट फाइंड करना है. मीन्स व्हाट वी वांट टू डू, इधर dy by dx है, dy इंटू dx है, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल dx इंटीग्रेट करना है फर्स्ट, उसके बाद dy इंटीग्रेशन करना है. मीन्स आई वांट टू चेंज दिस ऑर्डर फॉर दिस इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है. इधर इंटीग्रेशन dy विथ रिस्पेक्ट टू dy फर्स्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, इसीलिए इनिशियली जो स्ट्रिप पैरेलल होती है, जो इनिशियली जो स्ट्रिप पैरेलल है वो स्ट्रिप पैरेलल है y एक्सिस को. इस y एक्सिस की जो स्ट्रिप पैरेलल है उसको हमको x एक्सिस को पैरेलल करके न्यू लिमिट फाइंड करके हमें क्या करना है? चेंजिंग ऑर्डर से इंटीग्रेशन लिखना है. मीन्स हमको dx फर्स्ट इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट इंटीग्रेट करना है, नॉट फॉर dy. मीन्स इसका प्लेस चेंज करना है. इधर dy इंटू dx लिखा है तो dx इंटू dy करना है. चेंजिंग ऑर्डर फॉर इंटीग्रेशन. लेट अस स्टार्ट. ओके, जो लिमिट पता चला ऊपर के इंटीग्रेशन ऑब्जर्वेशन करने के बाद, हम फर्स्ट dy इंटीग्रेशन कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू dy के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो लिमिट, हमारे जो स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस को होती है. नाउ आई वांट टू फाइंड द चेंजिंग ऑर्डर फॉर इंटीग्रेशन. चेंजिंग ऑर्डर इंटीग्रेशन के करना है, इसीलिए जो ड्रॉ द स्ट्रिप पैरेलल टू द x एक्सिस. Now draw the strip parallel to the x-axis. That is a strip parallel to the x-axis. If you are drawing the strip parallel to the x-axis, अगर x-axis को strip parallel है, तो x-axis की लिमिट फर्स्ट मिलेंगी. ओके, x-axis की लिमिट फर्स्ट मिलेंगी. जब लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टाइम जो x एक्सिस को जो पैरेलल जो लिमिट है, वो फर्स्ट टाइम किधर टच होती है? दिस शेडेड पोर्शन में. तो इस लाइन को शेडेड टच होती है, दैट इज लाइन इज L2. L2 लाइन को फर्स्ट टाइम x एक्सिस में जो स्ट्रिप पैरेलल होती है, दैट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट स्ट्रिप आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. ये स्ट्रिप जो मूव हो रही है लेफ्ट टू राइट, इधर से मूव हो रही है, ये फर्स्ट टाइम जो स्ट्रिप इधर एक्स एक्सिस को पैरेलल है, वो टच होती है L2 लाइन को, एंड L2 लाइन है y इजिकल टू x. अगर x एक्सिस को स्ट्रिप पैरेलल है तो मुझे x एक्सिस की लिमिट मिलेंगी. x एक्सिस को स्ट्रिप पैरेलल है तो मुझे x एक्सिस की लिमिट मिलेंगी. दैट इज अ लोअर लिमिट फॉर x. व्हाट इज अ लोअर लिमिट फॉर x? लोअर लिमिट फॉर x इजिकल टू y. x की लोअर लिमिट क्या है? y. x की लोअर लिमिट क्या है? न्यू लिमिट क्या है? न्यू लिमिट है y. व्हाट इज अपर लिमिट? अपर लिमिट फॉर x, अपर लिमिट फॉर x इज इक्वल टू, अपर लिमिट फॉर x इज इक्वल टू इंफिनिटी. अपर लिमिट फॉर x इज इक्वल टू इंफिनिटी. लोअर लिमिट फॉर x इज इक्वल टू y, अपर लिमिट फॉर x इज इक्वल टू इंफिनिटी. दिस इज स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद. नाउ मूव दिस स्ट्रिप टू upward and downward direction. Now we are moving that strip is equal to upward or downward direction. If you are moving that strip is equal to downward directions, we get the lower limit. If you are move that strip is equal to upward direction, we get upper limit. If the strip get moved toward the down directions, what is the line, last point of that region? That line get touched, that strip get touched at the last point, that is a line is equal to L1. L1 line means is equal to x axis को last में that strip get touch होती है. If lower that strip get moved, that touch is equal to x axis, that is equal to L1 line. And what is the line? If you are moving, x की limit already get completed. That is a limit for y.
and y is equal to 0 is the lower limit. If you are moving the step is equal to upward, if you are moving the step is equal to upward, वो स्टेप अपवर्ड जब मूव होती है तो अपवर्ड मूव किधर मूव मूव हो जाएंगे, दैट स्टेप अपवर्ड मूव होते 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 इस पॉइंट तक मूव हो सकती है। तो इसी लाइन को x इज इक्वल टू वाई लाइन को ही मूव हो जाएंगे, लेकिन दैट इज अपर मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो अपर मोस्ट पॉइंट ए पॉइंट है, दैट इज इंफिनिटी 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 पॉइंट को मूव होंगी वो, दैट इज लाइन। ओके, दैट इज अप अपवर्ड मूव करते करते हम जाएंगे तो अपवर्ड मूव हो जाएंगे y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस को, बट मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है जो जो उधर टच हो सकती है, दैट इज इंफिनिटी इंफिनिटी। मीन्स x y की लोअर लिमिट क्या है, हम y को पैरेलल स्ट्रिप मूव कर रहे हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, पहले स्ट्रिप x एक्सिस को पैरेलल थी, तो x की लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट मिल गई, लोअर लिमिट मिल गई x की इज इक्वल टू y, अपर लिमिट मिल गई x की दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट मिल गई y इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट मिल गई y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, यही हमको मिल गया है, लेट अस ऑब्जर्व फॉर दैट। ओके, यही हमको मिल गया है। ओके, नाउ जब ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो हमको क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो लिमिट हमको मिलती है, तो दैट लिमिट वी गेट ऑब्जर्व फॉर दैट, दैट लिमिट इज कॉल्ड ओल्ड लिमिट। और जो दैट इज ओल्ड लिमिट फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन से मिलती है, और ये जो न्यू लिमिट हमने जो फाइंड करते हैं, दैट लिमिट वी आर फाइंडिंग फॉर न्यू स्ट्रिप। अगर जो न्यू स्ट्रिप हम पैरेलल ड्रॉ करके जो न्यू स्ट्रिप हम डालते हैं, उस न्यू स्ट्रिप से हम न्यू लिमिट फाइंड करते हैं। कौन सी लिमिट मिली, हमने पहले इनिशियली एक्स वाई एक्सिस को पैरेलल स्ट्रिप थी, हमको ऑर्डर चेंज करना है, वी वांट टू चेंजिंग ऑर्डर फॉर इंटीग्रेशन, देयरफॉर वी आर drawing the strip which are parallel to the x-axis. Therefore, limit lower limit is equal to y and upper limit is equal to infinity, and a lower limit or y is equal to 0, upper limit for y is equal to infinity. Now write down that. First of all, I want to solve this limit for means I want to change this integration. Integration change करना है, पहले पहले y के साथ इंटीग्रेशन हो रहा था, हमें x के साथ इंटीग्रेशन करना है। Therefore, write down this. Write down double integration f of x, write down what we are writing, we want to change this integration, ऊपर dy by dy into dx था, now we are writing here dx into dy, f of x into f of xy, this is a function of x and y। now तो write down the limit for x, this is the dx, हमको dx फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करना है, इधर ऑर्डर ऑर्डर चेंज करने के बाद जो लिमिट इधर आ जाएंगी दिस इंटीग्रेशन के लिए, तो लिमिट आ जाएंगी x की। what is the lower limit for x, that is y, what is the upper limit for y x, that is infinity, lower limit for x is equal to y, lower limit for x upper limit for x is equal to infinity। now what is the दिस इज लिमिट फॉर y, जो जो इंटीग्रेशन है उसके जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, दिस इज y की लिमिट है। व्हाट इज द लोअर लिमिट फॉर y, y इज इक्वल टू 0, व्हाट इज अपर लिमिट फॉर y, y इज इक्वल टू इंफिनिटी। इट इज द ऑर्डर फॉर इंटीग्रेशन गेट चेंज, इस तरीके से वी आर चेंजिंग द ऑर्डर फॉर इंटीग्रेशन। दिस इज अ 5 marks questions। In this type, we are changing the order for integration, and in such type of questions, there have the 5 marks weightage। इसका क्या है, 5 marks वेटेज है क्वेश्चन में। ओके, मॉड्यूल नंबर 4 में। Okay, there are three questions are given. I solved three questions. See that questions, how the question gets solved. And if you have any problems, you can ask anywhere. Now we are stopping for this changing order for integrations. One concept get clear. For these questions, in this question bank, there are existing the three questions. One question get I completed. I hope you must be solved the second question and third question. Okay, second question and third questions. If I get times, I get revise these questions also. Okay, now we are stopping here.